official invitation from the Honourable Speaker of Pakistan, given the circumstances and the developments in Kashmir. During this short but pertinent visit and timely visit, हमारी आज सुबह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, फॉरेन अफेयर्स के साथ ब्रीफिंग्स हुई हैं. We will be meeting the Prime Minister of Pakistan, and also we are hopeful that we will get a visit on the line of control over the next 2 days. The situation at the moment should be something that should concern the entire international community. ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, फर्स्टली ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है. सेकेंडली ये मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी है. एंड thirdly, it is in direct contravention of numerous international obligations that all states have, and in particular Article 49 of the 4th Geneva Convention. And whilst we welcome the Security Council's imminent meeting on this matter, और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खास तौर प्रेसिडेंट मसूद खान साहब, I think he is somebody जो ये एक बेहतरीन सफ़ीर कश्मीर के हैं इंटरनेशनली. ये काफ़ी दफ़ा इनसे एज ऑल पार्टी मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी है. इंटरनेशनल इवेंट्स जहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई है, एंड आई थिंक ही इज़ इन ए वेरी, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे सफ़ीर मौजूद हैं कश्मीर के लिए who are internationally respected on this issue, और ये बहुत ज़रूरी है in the times we have ahead. लेकिन पाकिस्तान के स्टैंड्स को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस पीसफुल अंदाज में पाकिस्तान ने has handled some very difficult period, not only most recently but over a number of months now. और सिक्योरिटी काउंसिल पर यह बात आना भी बहुत बड़ी बात है. आफ्टर ऑलमोस्ट 50 years द कश्मीर एजेंडा, और इंटरनेशनली दिस वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, लेकिन उसको ओवरकम के. लेकिन आई हैव टू से दिस कि आई एम स्टिल, आई वांट टू रजिस्टर कंसर्न, बिकॉज मैं समझता हूं द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव गॉन फर्दर. उसमें देयर शुड हैव बीन उसमें एक अग्रीड स्टेटमेंट ऑफ कंडेमनेशन. वो कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी. Whilst we welcome it, लेकिन I believe the Security Council still has a role to play, a huge role, and the international community has a role to play, and we will continue to push for that as far as we are able to in the British Parliament. दूसरी बात, जो आज वहाँ सिचुएशन है ब्लॉकेड का कश्मीर में, वी हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन. हमारे पास आज इतनी सिर्फ इंफॉर्मेशन, द मोस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वी हैव कि अभी तक 4000 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं अंडर द ड्रैकोनियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट. नाउ दिस इज अनकंफर्म्ड फिगर्स, लेकिन व्हेन यू हैव ए ब्लॉकेड व्हिच द यूनाइटेड नेशंस चीफ ऑफिसर्स डिस्क्राइब एज ए ब्लॉकेड बियॉन्ड अदर ब्लॉकेड्स, फिर उस वक्त ये इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती है. जब इंडियन ऑपोजिशन लीडर को बॉर्डर से वापस भेजा जाता है, उसके डेलीगेशन को, इवन दो दे सेड दे विल अडियर टू द गवर्नमेंट, उस वक्त आई थिंक इंफॉर्मेशन इज वेरी लिमिटेड, एंड देयर इज अ रीजन इट्स लिमिटेड. लेकिन जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द ब्रीफिंग्स वी हैड, वहाँ आज मेडिसिन की मसला बना हुआ है, वहाँ जो persecution, oppression or injustice है that continues, and these arrests that have no legal basis under any kind of law, ये भी वहाँ मौजूद हैं, which is all leading to a very worrying situation. और हम ये भी
انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطالبہ کرتے ہیں اور برٹش پارلیمنٹ میں بھی کریں گے کہ دی انجسٹس اگینسٹ دی کشمیریز مسٹ اسٹاپ اینڈ مسٹ اسٹاپ امیڈیٹلی. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور یہ خاص طور میڈیا کے ساتھیوں کے لیے ہے کہ جو ارسپانسبل لینگویج، جو لوس لینگویج انڈین منسٹرز کے طرف سے آئی ہے، ان پرٹیکولر the irresponsible and loose language used around Azad Kashmir, we wholly condemn. یہ میں پاکستان میں آ کر بات کرنا چاہتا تھا اور میں آزاد کشمیر میں جہاں سے میرا اپنا بھی فیملی کا تعلق ہے, the irresponsible language that has been used, I would warn those people that use this very irresponsible language, and they should refrain from using this, and the international community must put more pressure. یہ provocative language ہے اور یہ اس قسم کی لینگویج جو انٹرنیشنل سطح پر بات کی جاتی ہے, it is wholly inappropriate, and I send that warning. Thank you very much. Thank you. Khalid Behmood sir. جی جناب, Honorable President Azad جموں کشمیر مسعود خان صاحب, آج ہم یہاں آئے ہیں جیسے عمران بھائی نے کہا ہے, ہم جناب آنریبل اسپیکر صاحب کی دعوت پہ یہاں آئے ہیں کیونکہ ہماری یہ سوچ تھی کہ ہم جیسے جو ہندوستان نے جو ایک حماقت کی ہے اس حساب کے ہم آ کے دیکھیں کہ کیا اصل میں ہو رہا ہے, کیا ٹینشنز ہے اور کیسے یہ ایشوز کے پاکستان پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, تو پاکستان کیسے اس کو نبت رہا ہے, کیسے اس کو ڈیل کر رہا ہے. تو کچھ پوائنٹس جو عمران بھی ریز کیے, صدر صاحب نے بھی ریز کیے, میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے لیے یہ برطانوی جو عوام ہے, 15 اگست کو جب لوگ اکٹھے ہوئے, وہ ایک سب سے بڑا ڈیمونسٹریشن تھا جس میں 15 سے 20 ہزار لوگ آئے, اور اس ڈیمونسٹریشن کا لیڈرشپ کوئی نہیں تھی, نہ کوئی سیاسی تھی اور نہ ہی کوئی کشمیری رواج سے وہ ایک کوئی موومنٹ تھی. لوگوں نے گھر سے اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, مساجد سے وہ نکلے, خود کوچز بک کی تو وہاں پہنچے, کیونکہ جذبہ ایسا ہے برطانیہ میں آج کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ یہ ہندو گورنمنٹ کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں آج کل انڈیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ذکر کرنا چاہیے ہندو گورنمنٹ کا یا ہندوستان کے حساب سے, کیونکہ وہ بھی یہی بننا چاہتا ہے اور یہی کر رہا ہے. وہ صرف نیشنلسٹ ہندو موومنٹ کے لیے وہ چل رہا ہے اور سب اور مائنارٹیز کو وہ ختم کر رہا ہے. جہاں تک کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ فٹ فار پرپز نہیں ہے. 70 سال سے کشمیری آ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی ابیوز ہو رہی ہے, تو کوئی قدم یونائٹڈ نیشن نہیں اٹھا سکے. آبزرورز نے وہاں کیا کیا, انہوں نے ایک رپورٹ بھیج دیتے ہیں, کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا, کوئی اثر نہیں ہوا اس پر. اگر ایسٹ ٹیمور اتنی ریزولوشن بھی نہیں ہوئی تو بڑا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. سدرن سوڈان کوئی ریزولوشن کے بغیر وہ حال ہو سکتا ہے, تو کیا کشمیریوں کی جان کا کوئی مول نہیں ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کو. جہاں تک برطانوی گورنمنٹ کا سہارا ہے, ہمارے لیڈر جو ہیں جنرل گورنر لیبر پارٹی کے, انہوں نے آلریڈی کنڈیم کیا ہے کہ جو انسانی حقوق پہ جو ہندوستان کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ابھی تک ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر بورس جانسن نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. ہم نے خط لکھے ہیں بورس جانسن کو, فارن سیکرٹری کو, ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. جب اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری پارلیمنٹ اجلاس واپس ہوگا تو ہم وہاں صرف ہم کشمیری اورجن کے نہیں, پاکستانی اورجن کے نہیں, جو بھی ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ضروری ہیں اس پہ وہ پوری توجہ کریں گے اور گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے پارلیمنٹ چیمبر میں. ہمارے پاس بہت سے ذریعے ہیں, ارجنٹ کوشچنز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, جنرل ڈبیٹس ہیں, ویسٹ منسٹر ہال ڈبیٹس ہیں, ریٹن کوشچنز ہیں, سو فارن آفس کوشچنز ہیں. ہر ایک جو ہمارے پاس
अरबा मौजूद है, उससे हम गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि वो आगे आए और कुछ करें। सो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है अब जो पिछले 70 साल से कश्मीरियों से हो रही है वो हद से अब टप गई है, और हमें किसी हिसाब से बैठना नहीं और देखना नहीं कि वो क्या करेगा। हम कश्मीरियों ने देखना है कि हम क्या करें। बहुत अरसे से हमने लोगों में छोड़ा है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ करेंगे, ह्यूमन राइट्स वाले कुछ करेंगे, यूरोपियन कुछ करेंगे, ब्रिटानिया की गवर्नमेंट कुछ करेगी। मैं समझता हूँ जितने भी लोग जो हैं इंसानी हकूक को जो मानते हैं, जो समझते हैं कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या कश्मीर में हिंदुस्तानी कर रहे हैं, क्या अब्यूसेस कर रहे हैं, क्या समरी किलिंग्स जो खुदा खासा ना हो अगर हुई तो वहां जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में मोदी को प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे बातें हो रही हैं, जहां तक वो अपने अपोजिशन को जब वो वहां पहुंचते हैं उनकी गवर्नमेंट में दावत पर, तो उनको कहते हैं आप अंदर नहीं आ सकते, तो वहां जब राहुल गांधी कहता है कि मुझे आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी ले चले, तो वहां नहीं उसको ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो ऐसी बातें छिपा रहे हैं जो खुद हिंदुस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बता रहे। तो इसमें जो बातें हो रही है मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो वो कर रहे हैं। तो हमें बसीयत एक ह्यूमन राइट्स सिविल लिबर्टीज के बारे में जहां भी हमारी पहुंच है इंशाअल्लाह वहां तक हम करेंगे। और हमें इस बार किसी और पे जैसे लिखा है कोई दबाव नहीं करना है। हमें चाहिए कि हमारे लोग जितने भी हैं, जैसे हमारे दोस्त स्टीवन टिम्स आए हुए हैं, ये इनकी बड़ी किरदार है, बड़े से 25 साल में इनको पार्लियामेंट में, तो ऐसे लोग हमें इकट्ठे करके तो इस बात को आगे ले जाना है। यूनाइटेड नेशन तक हमें खुद जाना चाहिए, गवर्नमेंट पर खुद जाना चाहिए, और जिस हिसाब से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हादसा अगर हमने अब चुप करके बैठ के किसी और पर छोड़ दिया तो मैं समझता हूं ये कश्मीरियों के लिए बहुत ही स्याह दिन होगा। शुक्रिया। Thank you. I'm delighted to be here with my colleagues Fawad and Imran as part of this delegation and part of the quest for a peaceful resolution of this dispute. I represent a constituency called East Ham in the East End of London, and there is a large group of people living in my constituency whose roots are in Kashmir, and so people have been raising their concerns with me about this issue throughout the 25 years that I've been their Member of Parliament, but never more so than this month, given the events that we've seen. In my mind, there's two sets of issues here. One is a practical set of issues, and the other is a principle issue. The practical issues are the problems being faced at the moment by people in Kashmir. One of them clearly is the communications lockdown. That means we don't have, as we've been reminded, we don't have much information at the moment about what is going on, but there is a lot of worry about what is actually happening, and there's a need for information, if only to reassure family members and others outside, and just to get a truthful picture of what's going on at the moment. The communications lockdown in itself is a serious problem. For example, for people living in my constituency with family members in Kashmir who are in touch with them regularly by telephone but aren't able to communicate at all at the moment. There's a growing worry for them about what's really happening. But there's also the principal issue that if there is to be a change in the status of Kashmir, then that requires the consent of the people of Kashmir, and that would be true for any state anywhere in the world. It is particularly true given the history of United Nations resolutions in relation to Kashmir. So I hope this visit will help us to get some answers, and I also hope we're going to get some changes. Thank you. थैंक यू। आपके सवाल जी हमीद साहब। सर मेरा सवाल ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया है, उसमें उन्होंने दो चीज़ें जो बयान की बताई हैं। एक तो ये कहा कि हर हफ्ते हम कश्मीर के साथ सुधारे खेती करेंगे, और
कुछ इंटरनेशनल लीडर से भी उन्होंने बात की, ट्रम्प से। साथ कश्मीर मसूद खान और बरतानवी पार्लिमानी वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूद खान का कहना था कि भारत को मजबूर किया जाए कि वो मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फैसला वापस लें, जबकि बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन अंदाज में मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मालूमात बहुत कम आ रही हैं। मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जी न्यूज़ के साथ रहिए।